Good evening, friends. Respected Raipur Senior Journalist, Mr. Chawla, Agent DD, my arrogants, agents, parents, and of course, winners. Winners in the sense, winners for the year 24-25. Because we are a non concern. Every year you have to win and celebration should be. Yes, of course, Mr. Chawla was telling what happened, how it happened. At last it happened, and we are proudly celebrating this function. When I was talking of this function, Nandini and Mr. Ashwini came to me. They told 5 minutes each. I told, sorry, it may be less than that, maybe more than that. Please just for that. Because why I am talking this? This is a one of occasion when such people, some luminaries of the zone are available in one platform. Because we visit from region to region. One part of the region, generally one part of the region team are available with us. But it happens once in a, of course once in a year, that you all are here and we have a chance to have a communicate some thoughts, not all thoughts, some thoughts which we think fit. I don't know what you think. And thank you for this to Jonah giving permission for such kind of functions and such to and thanks to the skills which are involved in this function. Coming to this function, you are named as Uttam, this Bada, and looking at the picture where somebody is going up and off. Of course, this is motto, and this should be motto, not only your professional life, of course, in your personal life. Why? What for we are here? We are here to do something, and we have to go. Coming to bank, the bank, whether I am talking of banking industry, actual work done by you people in the grassroots. And this pyramid is like that. People in the region, zone, of course in higher office, in central office and head office, they are only giving the instructions, making policies. But you are the warriors. You are the warriors, I repeat, you are the warriors. You are implementing in the field. Maybe wrong, maybe right, but whatever food bank is taking today, maybe the size of balance sheet, maybe the size of the profit, maybe the size of NPA, whatever may be, because of the work done by the people in the grassroots, people like you. And for this occasion, I must request you to clap for yourselves. When you are taking this hour, I think almost all are our winners, and some people are from zone to facilitate the functions. One request I can make you, please do take this hour and share with your family members. Why? Many times there is a question, what you are doing, along the years, many times you are leaving your home, maybe early, maybe little late, maybe little late. But of course, somewhere or other, bank is recognizing your efforts. And secondly, you may have small kids. They are also following your footsteps. Believe me, behavior of your son, your daughter is almost identical as of you. So please at least tell him, this is our, not for the person, for the branch, of course for the family members, of everybody here, and those are not here also. Because it is a team game. When you are coming to the bank, it is a team game. It is not an individual event. It is a team game. It happens somebody is doing some role, somebody is doing no, but at the end, team wins. The team where I am talking of team. Team is your team, your family, and of course team of your branch. And this is my request from this platform, go and celebrate with the family and with your branch team also. And also tell them, because what I got, I was talking to these people, say that there are 185 hours. Number of persons may be less or more, 185 hours. And if you see to these hours, interestingly, you may be winner of
there are some persons here with 3, 4 or 5, but somewhere you have done with some parameters. When we have 185 hours, after you must be giving 3, 4 years like that, but still there are so many streams. In one stream where you are award, winning an award, you have done well. Whatever others. I am not blaming you have not done well, but when I am thinking of award, you should take a place today. Yes, this stream I am done well. I retain this award in other stream also. I will try to get this award. Secondly, coming to this award, when you are taking award, of course you have done well in the zone. Have you ever thought what is your position in paralysis? Have you ever thought? If at all you have thought that, please do check. Because we want some persons, maybe some regions, should be pan-India presence. Their pan-India presence should be so luminous. We will feel proud of the zone. Yes, this person from this branch, this region from our zone, is pan-India has done well. This will give a different scenario and definitely you will be a person of pan-India importance. Because looking to the size of our zone, we are not a big zone, but it is a small zone. But nowhere I find a person we are not competent enough to reach there. You have the potential and capability. Please do work on this manner so that you will be recognized in pan-India in any parameter anywhere. This is my request to the regions and of course to the person sitting here in the branches also. Please do excel in pan-India parameters. And coming to the other things, when you are working the branch, you are working with the 2 teams, the team of the branch and of course the team outside is the customer. You just remember, the bank is of course 180 years. It's not like that. 180 years, you just see somebody taken bath at the time of the bank may not be here in the world. It's not like that. And interestingly, if you are coming to our family, जो रिलेशन हमारे साथ एग्जिस्ट करना है ना, मोस्टली आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट ऑल, मेरा घर का जो रिलेशन है ना मेरे से रिलेटेड है कि नहीं? मेरा मामा है, मेरा चाचा, मेरा दीदी है या मेरा इन-लॉ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आगे जाके मेरा फादर का रहेगा। वही मेरा कॉमिंग टू माई फोर फादर, मेरा पिताजी का पिताजी, कभी कभी थोड़ा दिस लाइन इज ब्लड खत्म हो जाता है, होता है कि दिस इफेक्ट इन लाइफ। हमारा फैमिली का जो रिलेशन जो हमारा इतनी चलता है, बट यू थिंक ऑफ बैक ऑफ 180 years, you will find people they are attached to the bank for generations. भाई उसका जो दादा आया था फिर नीचे उसका पिता जी है और बच्चे भी आ गए, they will tell the story we are attached to the bank because you should be proud in which type of organizations you are working. You are working for a relation of generations. अगर आपका सर्विस अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, you are making a bundle for a person, not for this generation, not for my lifetime. If you are coming to the lifetime during my lifetime, this is of course my service period, some are 30, 40, whatever many years, but you are creating relations for generations. So when you are talking that you are creating a relation of generation, you should know what is your responsibility. Why I am talking this? You can tell a lie to a person moving in a running train. आपका भगवान कोई बैठा बोला क्या करता है, बोले मैं फलाना बैंक में फलाना पोजीशन में, क्या जाता है तुम्हारा, अगले दिन तो मिलने वाला नहीं। But if see happens to your neighbor, can you tell like that? वो तो पता कर ही लेगा ना। तो you think you are creating a relations for generations. If at all you are creating a relation for generations, and what is your responsibility? At any point of time, you cannot resell the product. It's clear. Because you are creating, और दूसरा बात है, अगर किसी को आपने कुछ गलत दिया या गलत किया, उसका जनरेशन आपके साथ जोड़ने वाला नहीं है जब तक उनको याद होगा। You will find persons. There are persons, मना करते हैं आपके नहीं आपका ये हुआ था, ये whatever with reason. I
I am not coming to the reason, I am coming to the relations. Because of that, since from the beginning I have told you are the real workers, you are creating the history, you are creating the platform, others are just in pyramid because of other reasons. But here, your response is so high. When your response is so high, and coming to the banking, it is a service industry. Interestingly, your service is your product. And you cannot differentiate the product from other bank. Hardly any. This is a competitive age. कभी पहले हम बोलते थे जब हमारा बैंक कम कंपेयर हुआ था उस this private bank has a age over technology. Now today is nothing. It is blurred, nothing like that. Hardly there is a difference in the product. Hardly any. You must have come across, and I do believe you should know this. But what makes the difference to a bank? Only difference makes it your service. And service should be so class one. लोग याद करेंगे जैसे बोलते हैं ना लोग याद करेंगे and your thinking is to keep that generation with your bank. When you are thinking of the service and keep a generation with you, then your response goes much more higher. So for that, you should have two things. Service quality should be best and knowledge should be the best. Otherwise you cannot say this. You don't have you, just otherwise you are carrying somewhere. Your product is not visible, it is an intangible product. आपका लो प्रोडक्ट को देखा सकते हैं मुझे, but I am calling to electric shop purchasing this light. You show this is the light. This light ऐसे, this illuminate ऐसे होते हैं तो light हो जाता है. But what about your product? You don't have that product which you can show directly in the showroom. But your knowledge and presentation is your product. When you are doing this, you should have knowledge and service. Why? Sometimes people think I am working in the bank, working in the bank. मैं तो काम करता हूँ पैसा लेता हूँ. इसमें क्या और ज़्यादा क्या मिलता है? ज़्यादा ये मिलता है ये our reputation in the society where you are working. आपको लोग याद करेंगे. फलाना मैनेजर था उसके टाइम में वो ऐसे हेल्प किया था. Today I am from lakhs and approach. अब approach from approach to multi-crore person. And interestingly, funda of the gang, and I do have interaction to many professionals. अगर वकील को बोलेंगे, वकील बोलेगा झगड़ा होगा तो मेरा धंधा बढ़ेगा. It's not like that. वकील अगर झगड़ा होगा तो this is motto. जिधर dispute होगा then this things will happen and cases will come to him. डॉक्टर क्या बोलेगा? लोग ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगे तो people come to me for treatment. पर बैंक वाला ऐसा नहीं सोचता. बैंक क्या सोचता है? You grow, I grow. अगर कस्टमर ग्रो करता है तो हम ग्रो करेंगे. अगर कस्टमर के प्रॉब्लम है, there is economic crisis, I am not growing, I am in trouble. You are growing, I am growing. This is a win-win situation. This is interestingly the professor gives you an edge to market your product with a win-win situation. लेकिन you should have the capability to sell their product. For that you should have a proper knowledge of the product. Otherwise you will मिससेल हो जाएगा. But I told it is a generation का रिश्ता. एक बार रिश्ता टूटेगा, जुड़ेगा ही नहीं. So since you are award winners here, you are the luminaries, you are stars of this evening, of the financial year 24-25, you should have that one. Number one, if after you have that knowledge, you should incorporate this knowledge to your juniors, to your colleagues, and of course in the society. Because पता तो होगा today we are discussing. साहब बोले कि ऐसे क्या कल होने वाला है, कहाँ गया मैडम? अगर उसका इधर फंक्शन होगा, साहब बोले प्रेजेंटेशन ना हो, क्योंकि there are many products जो कस्टमर मालूम नहीं. जब आप सेल करना चाहते हैं, you have a showroom, you have that product show होता है ना, आप जब showroom लेकर प्रोडक्ट जितना हो ना शो अच्छा से करता है. यही शार्ट अगर लगा देते सबसे बेस्ट शार्ट हो उसको लगा देते ना, जिस ब्रांड जो प्लास्टिक का कड़ा करके लगा देता है, बिकॉज़ ये शो that you have to show that product, you have to market that product, make it. And always when we are making a relation for generations, yes, there is least chance, no least, zero tolerance for misselling of any product to any person. Otherwise
you are not trying to run your branch, not your bank for generations together. Because 150 साल में कितने लोग आए चले गए, बैंक तो चले गए ना. We are increasing number of branches. The profit line also increasing, balance sheet also increasing. So this is your responsibility. And other thing is additional influence is you also make hour of the things. Coming to another part of this hour functions, and the other day, MD sir was in the zone. He told one thing: compliance with ethics. I will come to compliance later on. First, I will talk about ethics. Ethics का in one group I asked what is the meaning of ethics in Hindi. They told नीति. मुझे बड़ा अच्छा भी लगा wording of नीति, ethics. आप लोगों को ethics के साथ काम करना है. अगर आप ये देख लिया, तो compliance का कुछ है ही नहीं. Compliance आई है इसके बीच में. Ethics is so big and so interesting and so low. Compliance इसके बीच में आ ही जाएगा. Again, I am talking. You are third to create a relation for generations. Coming to the bank, what should be your ethics? I will try to somewhere or other here have ethics. For me, you are a commercial institution, banking, and for this ethics for any bank or banking should be and must be economic development of a country. सोमेंद्र was telling, ब्रांच का, एरिया का, स्टेट का, देश का, यही तो है. अगर ये आपका इथिक्स हो गया, डेवलपमेंट करना है आपका इथिक्स है, तो यू कैन मिससेल. Then once you are misselling, you are distracting a customer, you are debiting a customer, debiting customer free, I am taking out. अगर नीति के साथ आप काम करे हुए, you cannot do a wrong selling. Why I am talking about wrong selling? I have given live example. I was in Calcutta, chief manager branch. When I joined, the lady came, not of course of high caliber, so मतलब गरीब भी बोल सकते हो. Came with a slip. Please do. I am not pinpointing anybody, number one, and please give a disclaimer. I am pointing anybody. Please do, please. And she told, sir, this is my, whatever I have deposited, 23,000 something I will recall. What is my status? Interestingly, the branch manager previously who had sold a life insurance product to their lady. 23,000 देना है. लेकिन either ignorance or overconfidence, the lady is not aware of the product. कि 23 साल 3 बार देने के बाद लाखों 2 लाख रुपया बराबर मिलेगा आपके रियल फाइटर्स. You think of a person. My नीति क्या है, मेरा ethics क्या है? इकोनॉमी डेवलप करूँगा, कंट्री का करूँगा, मतलब क्या? Each and every member who was my customer, उसका भी डेवलप करने वाला हो ना. 30 से चला गया. प्रीवियस लोग जो बेचने वाले थे वो तो नहीं है. You do not because of vigilance police, you do not have to stay in branch for 2 years, 3 years, then you have to go. हमने उसका डेवलपमेंट कराया कि उसका सत्यानाश करें. Just think of that. If you are doing, friends, please don't do that. If you are doing for short-term and ultra short-term gains. इसको छोड़ के, coming back to this example, क्या वो लड़की के मन में होगा, कोई लड़की के घर वाले क्या बोले होंगे रिगार्डिंग दैट ट्रांसफर दैट पर्सन वाज सोल्ड. क्या बता दो आपका होता तो आप क्या सोचते उसके बाद? आपको दुआ क्या बोले, अभिशाप देगा कि ये लोगों का कुछ नहीं. एक आपका बेटी, अगर आप इथिकली काम किए होते उसको समझाते. दिस इज ए प्रोडक्ट, यू टेक इट, इफ यू हैव अ कैपेबिलिटी you give in 3 years, then it is this. Otherwise, you give a sell a product, fitting to the criteria of a person. I am not telling don't sell it, but please utter. If you are saying I am giving one example, there are many. And interestingly, since I am defending compliance of the zone,
तो अगर कंप्लायंस नहीं बोलूँगा मुझे लगेगा बोल नहीं पाया, दिस इज अगस्त ऑडियंस, मुझे लगेगा मैं कुछ बोल नहीं पाया, आपको बता नहीं पाया. I should give you message. Many times we have come across, please do take it in a positive spirit. Again, I will repeat it. Many times we have come across branches, persons, not only here, in many places during my career. We have done well, taken prizes, but later on, when my friend says, team, something wrong is there. I have appreciated you. The entire audience, maybe Joe, maybe can appreciate a person because he has done a very good work. But later on, when people from my friend related is to their side, then समझ आता है something wrong is there. तो कौन सा रिलेशन का काम किया? Whatever your ethics, कौन सा ethics का काम किया आप लोग? मैं तो वही बोल रहा अगर ethics एक बार सोचा होगा कि I am talking, I am working for the long term interest of the band and society and the person when you are talking about society, that is a person. एक person को भेजते हो you are helping for the society. So please do refrain from this activity. Why? जो आपको तो होगा you are also cutting down the profit of the band. And interestingly, people are also happy to do that. वो जमाना आज नहीं हुआ. Yesterday I was coming from Odisha. पहले क्या होता था ना आपको देखा you have seen that crush सब चौक होता है ना, अब ऐसे घुस गया कोई बोलता नहीं था, मुझे पकड़ा नहीं. अभी there is a scanner, there is a camera fitted in church, even in the high roads. अगर आपका स्पीड लिमिट ज्यादा हुआ, देव क्या आपको कोई बताएगा नहीं कि आपने गलत किया. They will not tell you have exceeded the limit, you have crossed that line, zebra cross, nobody will tell you, they will fine you. ये जमाना इस जमाना का है, if you are at all thinking of digital, these are the जमाना. So please don't think, nobody is watching. Yes, of course, that may be time because of this system, we are not able to catch on, jail are there, but you will be the late. Is anybody here to be late? Is anybody here to deceive to himself? And my answer is no. Of course not. Definitely not. If it is the case, then why things are happening? You are taking award and other day my friend is saying that the team and his stuff is that something wrong has happened. And it's not a fact. This is a reality fact, real fact. So please do, this is my advice, you take awards, go for it, you sell the product in a flawless manner. You will grow, bank will grow, and of course economy will grow indirectly. If you will not do that, then you see you are not working on ethics. जब आपको नीति का बात आप इकोनॉमी डेवलप करूँगा, करिए. You are doing something now. You are putting back in trouble. Many accounts are coming this corner, and we are checking the staff account. We have a committee, and people are on the job. अभी हमने किससे बात कर रहा था वो कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन जो 4 दिन 5 दिन का बात है वो तब तक टेंशन बढ़ जाएगा. I don't remember. अगर ऐसा कुछ बात हो जाएगा टेंशन आपका बढ़ जाएगा. वही बात है. आई यू तो इनके टेंशन stop doing some wrong things. That is why I told you should have that knowledge. Knowledge is your power. Coming to your roles, you are leaders. And of course, regional managers, deputy regional heads, so you are mostly your branches, and each one of there is persons from desk officers, all are leaders in their own capacity. In a hard देखा था, I have also shared in one day in our prayer class that will be it's a beautiful one. The tagline is children's learn more than we speak or teach. This is the tagline of the art. Interestingly, two friends. बोला ना वीकेंड में आप किसके घर जाते हो कोई ऐसा तो वही फैमिली गेम्स एंड जॉइन दैट फैमिली आते हैं ना तो दो फैमिली शाम के अंदर बैठ के एक दूसरे के घर आते किसी के एक घर टू फैमिली the family is like that husband wife a son of course 5-6 years and second is observed husband wife and a daughter of course of same age शाम को सैटरडे सेकंड सैटरडे आजकल तो सब लोग घूमने चले थे पूरी विशाखापट्टनम लाइक दैट कभी कभी लोग आते हैं हम जाते थे मिलने के लिए लोग कभी कभी
यार इन गुजरात ओडिशा वाला हो गया, उसको मिलने चला गया, और somebody from back side में उसको मिलने चला गया, somebody working somewhere कैसे परिचित हो गया, चले जाओ, that was it, आजकल से कम हो गया। The story is like that, दोनों बातचीत कर रहे हैं, साथ में चाय सिप लेके बातचीत चल रहा है, और इस बच्चे लोग तो होते हैं ना, वो अपने वो दोनों खेलने चले जाते हैं। And all of a sudden, when these couples, two couples are talking to each other, दोनों बच्चे इंटर करते हैं। And the लड़का, जो of course is 5 to 6 years, ये कहते पापा मुझे शादी करना है, जी 5 साल का पापा मुझे शादी करना है, तो बड़ा मजा आता है ना, हंसी है, सब लोग हंसते हैं, उसके बाद क्या मजा आएगा, फिर तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फादर आस्क्ड, इस बार क्या करोगे? पापा मेरा सुबह थोड़ा लेट उठूंगा, क्योंकि स्कूल गई थी, उसको तो बार बार 6 बजे उठा देगा, बिकॉज स्कूल बस इज वेटिंग, मैं थोड़ा लेट उठूंगा 8 बजे के आसपास। इसके बाद मैं तैयार हो गया, 9-10 बजे तक ऑफिस चला जाऊंगा। दिस बॉय इज टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स अंकल एंड आंटी, तो क्या करूँगा? ऑफिस से देर तक काम करना है और थोड़ा लेट घर से आना, ऑफिस से घर आना। इसके बाद बोलता है दिस लेडी लड़की है, उसका नाम तानिया, तानिया समथिंग नहीं, तानिया सोनिया और मतलब सी होते हैं, मैं बोलता से वो लड़का बोला है मैं तानिया से ही शादी करूँगा। तो खेलते हैं ना बच्चे लोग, आपको याद होगा, वो खेलते थे बच्चे लोग, खेलते थे मेक देयर फैमिली। आजकल तो सब डिजिटल हो गया, सब लोग कैमरा वो देखते हैं, लेकिन हमारा जमाने में बच्चे लोग खेलते थे मेकिंग ए फैमिली लग जाए। तानिया शादी करूँगा, तानिया दरवाजा करेगा तो घर के अंदर आऊँगा, ठीक इससे मैंने तानिया को मारा। The boy of 5 to 6 years taking to the parents of uncle auntie, इसके बाद ये भाई को मारूंगा, इसको मेरे वाइफ को, ठीक? तो इसके बाद मेरा कमरे में चला गया। फिर इस गाय, इस लड़की जो है सामने इंटरप्रेट, नो, मैं आपके लिए पानी लेके आऊँगा, लेकिन आप पानी पिएंगे ऐसा हाथ करके वो पानी फेंक देंगे, धड़ के आवाज करके दरवाजा पर। This is the story. How? Why I am writing the story and what is the learning? बच्चे लोग जो आप बताते हैं इतना नहीं सीखते, जो आप करते हैं उसे ही सीखते। Again, I am talking you are leaders. You are leaders in the role capacity, maybe branches, state post, state fight, wherever you. जो आप बोलते हैं उसको छोड़ जो करते हैं ना, उससे भी लोग सीखते हैं। योर जूनियर, योर कॉलीग, अदर डे वी आर इन दिस होटल 52% शायद है टाइम नंबर, इधर हम बोल रहे थे ये आपके देख के सीखेंगे। हम तो जब बैटिंग करते थे बोलते आगे देखो पीछे चलो, हार्डली देयर इज चांस ऑफ गूगल और सर्कुलर साइड का होता था, इसे करते थे। इसीलिए प्लीज डू बी ए रोल मॉडल फॉर दैट पर्सन हु एंटर इन बैंक, हु इज जूनियर टू यू, who is working with you, we are looking towards you. Please do be a role model for that person. अगर आपका ethics जो होगा उसका ethics लगभग वही होगा। I'm clear. Any persons we have asked these persons कैसे किया? बोला पहले वाला करता था, मैंने किया, पहले वाला पकड़ में आया, दूसरे पकड़ में आया। Now these things are different. पहले वाला पकड़ में, second भी पकड़ में आया है। तो please do have a बेस्ट नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड क्लियर इथिक्स को आपने मंत्र बना लो, फिर कॉम्प्लायंस का बात ही नहीं करना बंद हो जाएगा। जब इथिकल काम करेंगे कॉम्प्लायंस का बात ही बंद हो जाएगा। कॉम्प्लायंस इस पैटर्न आ ही गया, wherever you are in use का बजाय, I am not talking of the professor only, in your family also you are a king, you are a king in your family। आपका फैमिली कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, आप घर का मालिक हो, तो मालिक है तो मतलब you are managing entire affairs of your family। If after you are managing entire affairs of your family, मैंने सुबह अभी भी बताया था, बच्चा आपको देख रहा है, and you must have heard, आपका स्टाइल, आपका बच्चे का स्टाइल जो 10-12 साल तक रहता है, बाद में हो सकता है विद अदर थिंग्स, लोगों के साथ मिलने के बाद थोड़ा चेंजेस होते हैं। तो प्लीज डू बी ए इथिकल पर्सन। आई एम टॉकिंग ए पर्सन, व्हेन आई एम टॉकिंग ए पर्सन, डॉक्टर इस बीच में आई है। You are ethical person in society, you are ethical person in the family, and you are ethical, of course, बीच में तो बैंक आई है। Then I don't think there is a chance that people will catch up, here compliance नहीं किया, compliance नहीं किया, compliance नहीं। There are many,
I am not here to count the knowledges because this function is something different. But please do ethics. अगर मेरा नीति हो गया, मेरा इकोनॉमी डेवलप करना है, सामने वाला कस्टमर सोसाइटी और ऑफ कोर्स सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री करके आप ये सोचिए चलो अपने के बारे में स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। अभी मुझे तो याद नहीं आता समुद्र बोला था कि पाकिस्तान वार हो गया अभी एवरीबॉडी थिंकिंग दैट यस 400 सुदर्शन चक्र पढ़ा है हम लोग। हमने बोला कि इधर से जब आता है तेरे मेरी पिक्टोरियल थिंग्स आर कमिंग। जब कोई सबड़ी कमिंग होते ड्रोन फ्रॉम पाकिस्तान में ड्रोन आता है, कोई जेट आता है, कोई एनीथिंग इज कमिंग में मिसाइल आता है, ये अपने मन से डिटेक्ट करके छोटा भेजता है ना, एंड इज नलिफाइड इन द स्काई। ये सोच के चलो अगर कोई साइंटिस्ट उसके बनाने के टाइम में अगर कोई कंप्लेंट्स है, कोई खराब किया होगा, ये होता है क्या होता है, फेल हो जाता था मतलब कोई मिल रहा होगा। तो व्हेन यू आर डूइंग स्मॉल थिंग्स इसका इंपॉर्टेंस को पता चला। ये भी हो सकता था और अगले 25 साल भी नहीं वो कोई वार होता है, एक्सपोर्ट वाला टेस्ट भी नहीं, बट जब टेस्ट हो गया तब पता चला ना, बिकॉज ऑफ दैट वी आर मूविंग इन सोसाइटी 56 इंच चेस्ट लेके घूम रहे हैं ना, हमने वो कर दिया, ये कर दिया। आप सोच थिंक ऑफ ए साइंटिस्ट वाज डेवलप्ड दैट, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम रशिया। अगर वो साइंटिस्ट सोचा है क्या है, वो पूछता है मुझे, मेरे को 5 साल काम करना, 2 साल काम कर निकल जाऊंगा, स्विचिंग क्या हालत होता है। इंटरेस्टिंगली if you heard Modi's speech, there are some indigenous weapons we are tested. But tested, but advantage here. ये तो हो गया, ये लोग जो काम करना कर लिया। Now they are talking डिफेंस का जो मार्केट है इंडिया के बढ़ गया, because other country are looking. And India ये बोला कि ये दिया मुझे, and it is working. So now this economic development हो गया ना, and they will place orders, other countries place orders for indigenous products, and we will be able to. When you think of this compliance and think of ethics and all, अगर आप छोटी सी भूल when you are selling a product अगर आप करते हो कितना प्रॉब्लम होता है। आप सोचो आप यही कॉम्प्लायंस लेके अगर आप जाकर बैठते और आधा उधरा करके एसओपी अपने थाक में रखते, एसओपी हम पीछे रखते, अपने मन से कुछ भी करो, क्या हालत होता। ये 400 भी फेल हो जाता और 100 में जाए तो इंडिविजुअल्स हो कोई फेल हो जाता। And these people who have done this, they are not commerce. ये अगर ये आदमी ये याद का आदमी है ना, ये अगर फ्रॉम रशिया हमारा इंडिविजुअल किया, तो when you are in that position, why do not you think of compliance of the world? Why somebody go and tell you this is wrong, this is wrong, this is wrong? No, ये wrong नहीं है। Speaker, please. You are responsible enough, you are made enough, you are done. But please do keep ethics in forefront. एक बार ethics रख दोगे, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर कर दिखेगा, compliance तो बात ही नहीं होगी। No need to talk of compliance, no need to talk of inspection हो जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो please do. 2 मिनट, कहाँ गए? 2 मिनट ले सकते हैं? Please. And why I'm talking, because I don't have another chances having luminaries of regions congregated in one place. नहीं मिलेगा, that is why I'm taking 2 minutes का। One thing I learned, ये रामायण का बात कर रहा था, एक सीन रामायण का मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताऊँ। See, and this of course from last year, this to be राम राजा होने के पिछला हो गया कि नहीं हो गया? It is simply उसको शाम को बुलाता, नेक्स्ट डे उसको बनाना है राजा। बिफोर दैट इंसिडेंट करता कि आ गया, इससे पहले का बात है, दशरथ उसको बुलाता है, इसको राम जी को बुलाता है समझाने के लिए व्हाट इज रोल ऑफ द किंग। आई एम टॉकिंग दिस किंग, आई टोल्ड यू एवरीबॉडी हियर सिटिंग ए किंग इन देयर ओन कैपेसिटी। आपका जुडिशियल छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सब अपने अपने किंग है। आप सब किंग, आप इधर का किंग हो, डेस्क ऑफिसर अपना डेस्क का किंग, मैनेजर का किंग, यही है। दैट इज व्हाट टॉकिंग दिस। वो बोलते हैं दशरथ जी राम जी को समझाते हैं, बेटा कल से तुम राजा बनोगे।
तुम्हारा बहुत नॉलेज है, मुझे मालूम है। देखिए एक आने वाला राजा के लिए आने वाला राजा कुछ बोल के जाना चाहिए रिगार्डिंग दिस रोल ऑफ किंग कि किंग का रोल क्या होता है। तो मैं बोल देता हूँ सबको यू आप यू ऑल मोर आप तो रानी थे, जो बोले वो मानते थे। तो बोले जब राजा होता है, जिस दिन आप राजा होता है, आपका पर्सनल लाइफ कुछ होता है। ये जो है, ये जो राजा होता है ना, राजा होता है किसका राजा? राजा है प्रजा का। तो when you are a leader, your whole capacity, your personal life will be put in the back seat. Interest of the प्रजा, प्रजा का you just say तुम्हारा प्रजा कौन है? Of course your branch, customers, staff, your family members, your relatives. तो पहला है तुम्हारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है, इसको पीछे रख दो। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारा इंटरेस्ट है प्रजा, टू whom you are ruling। ये पहला फंडा तुमको लेना पड़ेगा, तब यू विल बी सक्सेसफुल फॉर। इसी में कष्ट भी आएगा, अपना कष्ट तुमको कुछ बोलेगी। राजा हो ना, राजा बोलेगा आज मैं डिफीट हो रहा हूँ, मोदी साहब बोलेगा हमको बहुत मार कर दिया, आज यू कम अप विद दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे लगेगा? आप अपना डिफीट को किसी को बोल नहीं सकते। साइमल्टेनियसली आप जो करोगे ये सोच के करोगे हमारी प्रजा मुझे देख रहा है। क्लियर? देखेंगे नहीं अलग है, क्योंकि एक प्रजा का मन में ये नहीं आना चाहिए I am doing only to myself interest। तब आप राजा हो, तो राजा तो हो जाओगे, लेकिन वो राजा वाला जो नहीं, आपको जो इस थिंग्स नहीं मिलेगा कि आई एम ए ट्रू किंग। तो जो आप करोगे दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट इनफ, प्रजा जो है ये सोचेंगे राजा मेरा हित में काम कर रहा है। नंबर 2। नंबर 3, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। क्लियर? इफ यू नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट, राजा नहीं है, लोग आपको पीछे बात करेंगे लेकिन राजा नहीं, इसको आसानी से घुमा सकते हैं। मस्ट हैव सीन, लोग आपको घुमा देंगे इफ यू आर नॉट क्लियर। इंटरेस्टिंगली आज के डेट में क्या है, हम लोग तो सर्कुलर निकाल कर पढ़ते थे, आज वो मोबाइल में थी। आप जब टक मारोगे तो सर्कुलर पूरा आ जाएगा, गूगल मारोगे वो भी आ जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ द लैंड, सही पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला था नॉलेज होना चाहिए। राजा का काम है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तब आप राजा कहलाओ। चौथा, राजा शुड रेस्पेक्ट दिस। बोलते हैं ना दिस, आपका अगेंस्ट कुछ बोलता है, कोई लोग बोलता है, इसको आप रेस्पेक्ट करना चाहिए, आलोचना को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तब राजा है। नहीं तो सब लोग आके मालिश करेंगे ना, इतना टाइप है, आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, आप जो बोले तो वन ऑफ द एम्प्टी वन आई विल देना स्टॉकिंग व्हेन यू आर इन विजिट टू माय रीजर्स से फैक्ट ऑफ शेयरिंग। बोले मोहती क्या मैं गढ़ हूँ? लेकिन आप गढ़ नहीं हो, लेकिन जब हेड ऑफिस में बैठता हूँ लोग बोलते आप जो बोलते सही, ठीक है फैक्ट नॉट नॉट ए फैक्ट। इसीलिए एटलीस्ट आलोचना को झेलने का शक्ति होना, तो अब राजा कह जाओ। एंड सेकंड थिंग, you should have your own system of collecting information। तब पता चलेगा ना, मैं तो बोलूंगा सर आप अच्छे अच्छे अच्छे, हम कितना, हम मालूम नहीं। पहला तो मुझे अंतरात्मा बोलेगा मैं कितना अच्छा हूँ, पहला आंसर। सेकंड आंसर, शुड हैव स्पाइस, लोग पूछ के बता दो, पता करो। बात मस्ट हैव सीन रामचंद्र somebody discuss क्या क्या बोला ना, आपका वाइफ इधर बैठ गया एक रात्रि में, जो ये था ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट स्टेट सीता है ना, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ थिंग। हमने सुनी कि दिस शुड बी इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रजा, देन आप राजा कहता हो। तो आई टू बिलीव ऑल मेंबर्स सिटिंग हियर आर राजा king in their own capacity। Please, you behave like a king। It is compliance इसमें आ गया।